Authentication, Authorization, and Accounting. AAA is one of the best way that you can control your management system, especially where you are running the routers, switches, and other devices in your enterprise. The AAA is not only allowed you to configure everything on the local router or any local device, just like we did in our previous video. We configure AAA with the basic configuration and we arrange every single information on the same one router. But in this particular video, we are going to start with to manage everything in a centralized management server. And how you can do that? You can do that with the help of Radius and the TACACS Plus server. And how you can do that, we are going to discuss in this video. My name is Harsh Jangra, and we will learn almost everything about AAA, including advanced configuration and how you can manage it centrally. So let's get started with this. First, I'm going to discuss with you about the basic concept of AAA, how this thing work and how you can manage it centrally. उसके बाद मैं आपके सामने show करूंगा कि how you can even practically implement it in your organization, which is really one of the great way to manage everything in your network. So let's start with the very first point that is called AAA. As you know कि AAA का मतलब है authentication की अगर कोई particular user आपके network में है and he wants to access something, first he has to be authenticate or authenticated by the router or any device you are using right now. The second A means authorization. Authorization means वो क्या क्या कर सकता है, मतलब उसके पास कौन कौन सी permissions हैं. That is a meaning of second A, that he can perform this particular task. क्या ये command run कर सकता है, क्या वो configure terminal में जा सकता है, and all that. And the last A means accounting, that will actually track all the information, whatever you did or your user just finished configuration on the router or firewall के ऊपर उसने कोई changes किए हैं, so it will track everything for us. Now guys, before to start with, let's say हमारी जो previous videos में मैंने यहाँ वहाँ पर सिर्फ एक ही router लिया था, just like you can see in this particular example. यहाँ पर मेरे पास एक router है, let's say that's perfectly fine for me कि मैंने configuration करनी है, because right now जो मैंने आपको video दिखाई थी अभी, तो उसमें हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो किया था लोकल डेटाबेस पे. तो जो भी चीज थी वो यहां पर स्टोर हो रही थी रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन. हमने जो ऑथेंटिकेट किया था, हमने जो ऑथराइजेशन किया था, और इवन हमारी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन थी वो भी हमारी यहीं पे स्टोर हुई थी. नाउ लेट्स से गाइस, यहां पर तो एक छोटा सा नेटवर्क है. लेट्स से यू हैव 200 डिवाइसेस. तब क्या करेंगे? सबसे पहली प्रॉब्लम दैट यू हैव टू गो to each and every router and configure AAA for their local databases, which is almost quite impossible to manage that much big network. Why is it so? Now imagine आपकी कंपनी में मेरे पास हमारे पास कुछ यूजर हैं. Take an example में I have user number 1, I have user number 2. Just imagine. Now these two users have the responsibility to make changes into the routing information, or you can say the create the connections or deploy the connectivity in between the locations. ये इनका job है. Now, if you have 200 routers and you already had configured AAA on that with the local database, तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा? You have to go to each and every router and create these two usernames, including their authorization, means what are their responsibilities, और उसके बाद आप manage करेंगे. Do you really think it is a good idea? According to me, not at all. So that is why the centralized management come into the mind, or you can say into the particular scenario. Now the first thing you should know that how your AAA actually behave and how it work. Then we will talk about some little bit advanced stuff in that. So let's start with the very first one कि AAA काम क्या करता है. Let's say कि ये मेरा AAA सर्वर है. Imagine कीजिए. So exactly AAA करता क्या है? यहाँ पर मैं actually AAA को सर्वर्स लूंगा because I have configured AAA on this particular machine.
पहले जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया था जो कि इस राउटर पे था, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फ़िगरिंग माय ट्रिपल ए विद द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एंड मैं अभी उस आपके सामने शेयर करूंगा इन डिटेल। तो अब मैंने अपने राउटर को क्या कहा, राउटर नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चेंज्ड। पहले जो भी तू कर रहा था मीन्स यू आर यूजिंग एवरी सिंगल थिंग विद इन योर लोकल डेटाबेस। अब आगे से अगर तुम्हें कुछ करना है, यू नीड टू सेंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन to this AAA, and if you want authentication, ask from here. If you want authorization, ask from here. And even you want to track the information of the configuration जो भी users ने की है, again you have to communicate with this particular server. So होता क्या है, जैसे कि अगर यहां पर एक यूजर है, मेरा U1 यहां पर है अभी, तो ऑटोमेटिकली वो ही वांट टू चेंज समथिंग इनटू द राउटर, तो उसने यहां पर रिक्वेस्ट सेंड की राउटर्स को। तो राउटर क्या करता है, राउटर विल सेंड वन रिक्वेस्ट टू AAA, सेड हे there is user one, he is trying to log in with me to make some little bit changes. Are you means is this particular user is authenticated, क्या ये proper user है, do you know his identity? तो ट्रिपल ए उसको रिप्लाई बैक करता है एंड सेड पास और फेल, इट डिपेंड्स ऑन अगर उसकी प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है इंक्लूडिंग यूजर नेम एंड द पासवर्ड, बिकॉज पहले हमारे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होते थे लोकल डेटाबेस पे, दैट इज ऑन द राउटर ऑफ कोर्स, लेकिन अब यहां पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए वी हैव टू क्रिएट यूजर नेम्स ऑन आवर ट्रिपल ए सर्वर। तो एग्जैक्टली जब वो ऐसा होता है तो इट विल आस्क यू दैट इज इट ऑथेंटिकेटेड, दैट ट्रिपल ए पास या फेल में आंसर देता है। इमेजिन कीजिए उसने दिया आंसर पास में। नाउ दिस पर्टिकुलर यूजर इज पास टू ऑथेंटिकेट एंड शुड बी लॉग इन ऑन द राउटर, हो गया। देन इमीडिएटली जब यूजर वन उसको कहता है लेट मी गो इनसाइड द प्रिविलेज मोड, तो ऑटोमेटिकली अगेन राउटर हर चीज के लिए वो ऑटोमेटिकली सेंड करता है ट्रिपल ए को रिक्वेस्ट, कहता है हे ट्रिपल ए दिस यूजर वन इज ट्राइंग टू गेट इनसाइड माय प्रिविलेज मोड, इज इट authorized to do that or not? जैसे ही ट्रिपल ए उसको रिप्लाई करता है इन द पास एंड फेल ऑफ कोर्स स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आपका राउटर बिहेव करता है, एंड विद द सेम सेटिंग वॉट एवर ही इज डूइंग, ही इज ट्रैकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एवरी सिंगल थिंग ऑन द ट्रिपल ए। ये बाय डिफॉल्ट उसका एक वे रहता है कम्युनिकेट करने का। नाउ समरी ऑफ दिस ट्रिपल ए, रिमेंबर गाइज, जब भी कोई ट्रिपल ए सर्वर्स कॉन्फ़िगर होता है और अगर राउटर को उसके साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है एज ए क्लाइंट, बिकॉज यहां पर जो एक सिस्टम एक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर बनता है, तो वो ऐसा बनता है कि जो ट्रिपल ए है इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सर्वर, बिकॉज यहां पर ये एक ऐसा सर्वर है जहां पर हम अपनी एक कंडीशन रख रहे हैं कि दिस यूजर शुड बी ऑथेंटिकेटेड, उस यूजर का पासवर्ड ये होना चाहिए, या फिर दिस पर्टिकुलर यूजर इज ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म दिस थिंग, दिस और दैट थिंग व्हाटएवर। तो एग्जैक्टली वो सर्वर की तरह बिहेव करता है, एंड विद द सेम वे जो आपका राउटर है इट बिहेव लाइक अ क्लाइंट, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम जब उसको कुछ भी करना होता है इज ऑलवेज आस्किंग टू द ट्रिपल ए। दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन वे इज गोइंग ऑन इन बिटवीन ट्रिपल ए सर्वर एंड ऑफ कोर्स योर क्लाइंट। अब ये तो हो गया। नाउ the way you have to configure AAA, for that you have to use two different protocols for that. मतलब ये है कि अगर आप AAA कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं for the centralized management, so there are two ways to do that. Number one, you can configure that by using RADIUS, and second you can use it by TACACS Plus. Now before to get into this, let me explain you one by one कि इन दोनों का मतलब क्या है, because you should know very well before to implementing कि कौन सा protocol आपके लिए best है for this kind of configuration. So let me discuss first about RADIUS. Now guys, the very first thing, the acronym means उसका full name क्या है। RADIUS का full name है Remote Authentication Dial In User सर्विस। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है इट इज अवेलेबल इन ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड मीन्स इट इज publicly available and any vendor can use this. मतलब अगर आपके पास लिनक्स सर्वर है you can configure RADIUS, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट
का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज इट रेडियस विदाउट पेइंग एनी मनी, मतलब इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर ऑल. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. नाउ is it really good to do that, or is it really good to perform? See guys, according to me, radius server is not bad at all by default. First, as we all especially for business point of view, we always looking for the free things, and that is why the radius particular like server hai jo bhi aap keh sakte hain, it is free of cost available. But the thing is, it only encrypt the passwords. मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर सिचुएशंस में बताया था कि जैसे कि राउटर के पास अगर कोई यूजर लॉगिन करने को कहता है, सो इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू ट्रिपल ए सर्वर एंड आस्क इज इट ऑथेंटिकेटेड और शुड आई अलाउ दिस पर्टिकुलर यूजर टू गेट इनसाइड और नॉट. जब वो सिचुएशन होता है और वहां पर जब यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया जाता है, तो उनमें से जो पासवर्ड का जो कम्युनिकेशन वे रहता है वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड रहता है. लेकिन उसके बाद जैसे कि अगर यूजर इज ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, सो इज इट ऑथोराइज्ड और नॉट, जब वो कम्युनिकेशन होता है वो एनक्रिप्टेड नहीं होता. वो कम्युनिकेशन पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट होता है. सो दैट इज अ मेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन से, विच इज नॉट provide you the better security or the best option to secure your environment. But yes, it is a good way to deploy that. And of course, it is using UDP like protocol, which is layer 4 transmission, or you can say the transfer protocol. मतलब कि वो कम्युनिकेशन करने के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करते हैं. एंड यूडीपी प्रोटोकॉल के साथ इट वाज यूजिंग फॉर ऑथेंटिकेशन 1645. देखो गाइस, मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम एनी वेबसाइट, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 1645 पोर्ट नंबर यूज हो रहा है. आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इफ इट वाज डिप्लॉयड और कॉन्फ़िगर्ड ऑन विंडोज सर्वर 2003, तो वहां पर ऑफ कोर्स आपका 1645 पोर्ट नंबर, यूडीपी पोर्ट नंबर यूज होता था फॉर ऑथेंटिकेशन. एंड ऑफ कोर्स फॉर 1646 पोर्ट नंबर यूज होता था फॉर like save the information on the centralized location, which is completely based for on the accounting system. लेकिन आज अगर आप कोई भी सर्वर लाइक लिनक्स रेड हैट 9 यूज कर रहे हैं, या फिर आपका IBM का AIX सर्वर 7.0 या 9.0 यूज कर रहे हैं, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का विंडोज सर्वर 2008 या फिर विंडोज 2012 यूज कर रहे हैं फॉर रेडियस सर्वर, सो इट इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड विद ऑथेंटिकेशन. UDP port number is 1812, and for accounting it is using right now the 1813 standard. For that, it is a kind of standard. तो जैसा कि आपने देखा, this is one of the way that you can configure your AAA server, and definitely I'm going to discuss in this video even in a practical manner as well. The second thing is the second way is the TACACS protocol. So let me start with the very first thing, that it is a Cisco proprietary protocol. That means it is designed by Cisco only, and it is used with Cisco devices only. Because Radius जो protocol है वो किसी भी device के साथ configure किया जा सकता है. लेकिन अगर आप TACACS Plus यूज कर रहे हैं, so you have to be remember one thing, you have to use Cisco products only. That's why the TACACS Plus is called proprietary protocol, and it is only available and configured with multiple ways. I'm going to discuss with you in this video. I will show you even in the practical as well. तो ये सबसे पहली चीज है. Second thing, the second advantage for TACACS Plus is it is fully encrypted. Means not only password, even the minor communication between the server, that is a AAA, and the client, that is router, हर एक payload, every single packet, every single frame, जो भी आपका ट्रांसमिशन में रहेगा, वो सारा का सारा encrypted रहेगा. And that is really one of the good thing, that if you are using TACACS Plus in your organization, which will allow you to communicate every single packet with encrypted way. Now guys, I forgot to mention that what is the full name of TACACS. The meaning is Terminal Access Controller, Access Control System. And आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, it is using TCP port number 49. It is by default
available and it is configured with the TACACS server, because there are other products also available, or you can say इसके साथ साथ TACACS के प्रोटोकॉल के अंदर और भी वेरिएशंस हैं, जैसे TACACS है, आपके पास अल्फा है. So we are not going to discuss that all, we are only going to discuss here TACACS Plus. The second thing you should know about TACACS Plus is that it is available now as an appliance also. मतलब guys, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी में, सो डेफिनेटली you had this experience with your Cisco networks that if you want to configure, if you're supposed to configure ACS server in your organization, you have to download or you have to purchase Cisco ACS 4.2 for your organization. And उसके अंदर आप, it's a kind of software or it's a kind of application, and आपने उसको Windows Server 2003 पे इंस्टॉल किया था, and you had configured everything with web console administration. तो वहां पर it's very like easy to do that on any of the operating system. But now guys, if you really want to do that, there are multiple ways available. Definitely it is available in a kind of applications, of course, called the software, which is right now 5.44, which is quite nice, featured, and बहुत सारे changes हैं, we will discuss in detail now. And उसके साथ साथ it is also available in appliance as well. Means if you dedicated appliance, you can say that आपको application use नहीं करनी है, because definitely if you install that application on any of the operating system, तो जो operating system की vulnerability है वो definitely ACS server को affect करती है, and like it is also quite vulnerable, so that is not a good option. That's why Cisco ने क्या किया, एक separate dedicated device ही उन्होंने launch कर दिया है for this. So if you want to do that, you have to purchase access control server and you can deploy it in your organization. Everything will be managed by ACS for that. Not only that, there is another candidate, you can say the candidate, it is also in the competition with TACACS Plus, that the identity services engine, it is used by TACACS Plus and other appliances as well. जो भी उससे ACS server से related हैं उसमें ये use होता है. So guys, just now we learned a little bit basics about Radius and TACACS Plus. Let me share with you a little bit more advanced with this, and then after some time we are going to do the practical related to TACACS Plus or Radius. Let's see which one is best for us and we will deploy step by step. So just now we talk about the authentication, authorization and accounting based on these both the protocols Radius and TACACS Plus. And you also learn that what exactly the basic structure for the AAA while communicating in between these both protocols. Now we are going to talk about a little bit more granular. मतलब क्या है कि you will examine very easily that what exactly there are more differences between these two protocols, and based on that you can decide that which protocols you want to suggest for your organization, and उसके साथ साथ इन दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल कहां फिट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप ये भी आइडिया लगा सकेंगे. So let's jump into this and try to understand that what exactly the more difference in between these two protocols. Let's start with the very first one, the Radius protocol. Radius server or protocol is really one of the good protocols, especially while you are trying to deploy for authentication methods. मतलब क्या है कि अगर आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं सिर्फ, then the Radius protocol is good for you. Now let's say कि यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है जो कि इंटरनेट पे कहीं पर बैठा है, and he had the VPN access for the organization. And यहाँ पर उसने VPN access किया and राउटर के पास रिक्वेस्ट आया and he get the access for the email system of the organization. So that is pretty good. And in this one, you know that we only doing one thing, that we just trying to cross check the authentication and then we authorize the user to access the network resources. मतलब कि जो हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट से आ रही है VPN के लिए, हमने सिर्फ करना क्या है, we just need to create or configure or deploy a protocol जो उसके यूजरनेम और पासवर्ड को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा. दैट्स इट. एंड उसके बाद हमने उसको फुल परमिशन दे देनी है फॉर हमारी ऑथोराइजेशन और हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए. नाउ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट TACACS Plus now.
नाउ लेट्स से यहां पर एक यूजर है, दैट इज यूजर 1 हियर, एंड यूजर 1 कहता है कि आई वांट टू ऑथेंटिकेट एंड आई आल्सो वांट टू मेक लिटिल बिट चेंजेस इनटू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। अब राउटर के पास सिचुएशन डिफरेंट है। यहां पर हो क्या रहा है, द यूजर 1 इज आस्किंग ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, हो जाएगा, but he is also asking to perform changes on the router that is related to the authorization. So guys, उस चीज में हमारा TACACS plus बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज, you can read this point that radius protocol is less granular authorization control, क्योंकि जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है बेस्ड ऑन रेडियस, तो ऑटोमेटिकली वो दो बंडल्स को, मतलब रिक्वेस्ट को कंबाइन करता है, मतलब ऑथेंटिकेशन को भी और ऑथराइजेशन को भी। जब कोई वीपीएन से एक्सेस करता है तो वो खाली ऑथेंटिकेशन के पैकेट्स ही नहीं सेंड करता, इट ऑल्सो सेंडिंग द पैकेट फॉर ऑथराइजेशन टू अलाउ एक्सेस टू द लोकल रिसोर्सेज जो भी आपकी कंपनी में अवेलेबल है। लेकिन टैकेस प्लस अगर ये चीज करे, इमेजिन करो कि जब ये दोनों पैकेट या दोनों इंफॉर्मेशन आपके पर्टिकुलर पैकेट में आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो ऑथेंटिकेट करेगा तो दैट मीन्स रेडियस सर्वर उसको ऑथराइज करने की भी परमिशन दे देगा। डू गेट माई पॉइंट? द सेम थिंग, अगर ये चीज एप्लीकेबल होती है आपके लोकल एरिया में, दैट डजंट मीन कि वो लोकल में है या बाहर है। द क्वेश्चन इज, यूजर वन इज ट्राइंग टू access the privilege mode or the configuration mode जहां पर वो चेंजेस कर पाए, तो उस सिचुएशन में द टैकेस प्लस करता क्या है, वो ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट को सेपरेटली हैंडल करता है, वो ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट को सेपरेटली हैंडल करता है, एंड द सेम वे वो अकाउंटिंग की रिक्वेस्ट को भी सेपरेटली हैंडल करता है। मींस फॉर एवरी सिंगल थिंग वो पूछता है, मतलब राउटर के पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो एसीएस से पूछता है, एसीएस से पूछता है, हे एसीएस सर्वर, ही इज आस्किंग फॉर ऑथेंटिकेशन, शुड आई ऑथेंटिकेट दिस यूजर? उसके बाद जब वो चेंजेस करने को पूछता है, हे एएए सर्वर, समबडी इज ट्राइंग और यूजर वन इज ट्राइंग टू एक्सेस द प्रिविलेज मोड, क्या मैं दूं? और उसके बाद ये भी करता है कि ये यूजर ने ये किया, कैन आई अपडेट दिस थिंग्स ऑन आवर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अकाउंटिंग? तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन पूछता है टैकेस प्लस, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच ग्रैनुलर, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्रोल of the authorization. And this is really one of the great stuff, or you can say great thing about TACACS Plus. तो जैसा कि आपने देखा, now it is up to you like which one you want to design or configure for your organization, because मैं आपको एक दोबारा फिर समरी देता हूं, बिकॉज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी गाइज आई ऑलरेडी वर्कड अराउंड 20 to 30 ऑर्गेनाइजेशन, एंड एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वांट अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इन दैट केस when they have the Cisco devices, they definitely need a protocol, or you can say a server who can manage everything centrally. So you should know very very carefully, you should know that what is the difference between these two protocols. तो मैं एक बार समरी में फिर दोबारा बोल देता हूं, रेडियस सिर्फ आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करता है, टैकेस प्लस हर एक सिंगल पैकेट को एनक्रिप्ट करता है। रेडियस सर्वर जब भी कोई ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है तो उसके साथ साथ उसके पेलोड में ऑथराइजेशन की भी रिक्वेस्ट को बंडल में बना के वो रेडियस सर्वर के पास आती है, विच इज रियली गुड, बिकॉज मैं आपको बताता हूं रेडियस सर्वर इज वेरी गुड इन अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज इट इज वेरी ग्रैनुलर, प्रॉपर्ली मेंटेन करता है, हर चीज का बताता है कि इस यूजर ने किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस टाइम पे क्या किया था, एवरीथिंग। दिस इज ब्रिलियंट स्टफ व्हेन यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग, अगर आप रेडियस यूज कर रहे हैं। लेकिन टैकेस प्लस इज ऑल्सो कैन डू द सेम, बट इट इज एक्चुअली सेपरेटेड योर AAA लाइक रिक्वेस्ट, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, वो उसको अलग अलग कर देता है। TACACS Plus is also good in accounting, but not that much good, just like you have the Radius protocol. And I want to tell you in the end that Radius server is applicable in your organization when you are trying to deploy the VPN server. अगर आपके पास VPN सर्वर है या डायरेक्ट एक्सेस सर्वर है, तो उस सिचुएशन में आप रेडियस यूज कर सकते हैं, इट इज अ गुड ऑप्शन। बट गाइज, जहां पर बात आती है डिवाइसेस को में चेंजेस करने की, जहां पर हर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके एंटरप्राइज इज गोइंग ऑन, एंड वहां पर यू डोंट वांट any kind of single mistake, that because that will definitely affect your whole network, तो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप
TACACS Plus को ही recommend करें. So now we just get the idea of radius and the TACACS Plus. Now let's jump into the practical and try to understand then how you can configure these two things and what are the ways and what are the commands especially that you can use to deploy this AAA with radius protocol or TACACS protocol. Alright guys, now we are on the demonstration, but before to do that, I want to remind you one more time about the radius protocol and the TACACS Plus protocol. So just now we learned that what is the difference between the radius protocol and the TACACS protocol, and we decide that the TACACS protocol is one of the best way to make your centralized management for the Cisco devices if you are running multiple devices in your enterprise. So right now in this particular demonstration, first I'm going to tell you the complete scenario, and then after that I'm going to show you the small idea that if you want to configure radius server for this particular demonstration, then how you can do that, which is pretty easy. And after that I'm going to show you the demonstration related to the TACACS Plus protocol, which we are going to finish completely step by step using AAA model. So let's get started, and before to do that मैं आपके सामने एक my topology रखना चाहता हूं जो मैंने आपके लिए create की है. Try to understand that topology first, and then step by step we are going to get inside and do the process. So guys, as you can see in this particular demonstration or in this topology, I just create a simple topology in which I have one router which is connected with three different you can say the devices or interfaces. The one interface is connected with firewall, and firewall is connected with internet. One device is connected with my DMZ network, and in this DMZ network I have already configured my servers, and one interface is connected with Cisco AAA server. So guys, before to deploy this, I want to talk about a little bit about this concept. गाइस, इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो हम अभी करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको आइडिया देने वाला हूं कि अगर आपको रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो वो कैसे करना है. एक्चुअली यू डोंट थिंक इट इज द परफेक्ट थिंग for your network, as we know that the whole session is, or you can say every single packet is not encrypted. So let me just give you a small idea that how you can do that. I am not going to share this configuration, but if you really want me to do it for you, please write down in the comment box, or you can send me the email. I will specially create the topology for you and upload the video with the radius configuration for this particular thing. Now, before to start this, I want to tell you that I have the Windows Server 2003 installed as a Cisco AAA server. And if you want to configure radius server, then what you have to do, you have to go to Start. In the Start, you just need to click on Run and type appwiz.cpl, which is called application wizard.control panel. So once you press enter, it will take to you to the next step. And before to configure this, I want to recommend you to perform two steps. Number one, please download and install the Java runtime, and it should be the latest one, of course. Second thing, please do not forget to install .NET Framework 2.0 Service Pack 1 at least. It is really good for both options, both Radius and the TACACS Plus. Of course, right now we are talking about Radius, but these both options are specially used in the TACACS Plus protocol that we are going to demonstrate after some time. But right now, just go to Add Remove Windows Components. And यहाँ पर आपको select करना है Network Services, because in my Network Services, यहाँ पर आपका Radius server available होता है. Why I choose Windows Server 2003 for this demonstration? This is also the question coming into your mind, because right now we are using Windows Server 2008, Windows Server 2012. Why I do not use that? Guys, मैं उसे यूज कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो Cisco ACS का जो प्रोडक्ट है, right now the latest product is ACS 5.4, and it is not just coming like an application. It is like available to just install the operating system. You have to install on any kind of
servers, and I mean you can say the appliances, and after that you can configure it later. I can do that actually, but with the help of VMware vSphere, and I don't have the license for vSphere product, and that is why I am unable to share with you that how to configure the latest version of the ACS 5.4. But I want to tell you guys, the configuration is same, protocol is same, nothing different. Of course, in the new version of ACS, you will find multiple advanced options, which right now for this particular video demonstration, not required or not in compulsory. So हमें उसके करने की ज़रूरत नहीं है. So what I use in this demonstration for TACACS Plus protocol, मैं यहाँ पर ACS 4.2 use कर रहा हूँ, जो easily available there on the Cisco website as well. तो इसीलिए मैंने Windows Server 2003 को use किया, because ACS 4.2 is purely working on Windows Server 2000 and 2003. So better we start with right now the radius configuration. So select the network services and click on details. जैसे कि आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट ऑथेंटिकेशन सर्विस. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू इनेबल इट and you have to install this. Now once you install this, the next step is to configure radius client. तो जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जस्ट गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड वहां पर आपको IIS ऑप्शन मिलेगा, दैट इज इंटरनेट ऑथेंटिकेशन सर्विस. उस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली it will open one wizard, and in that one you have to select radius client. उस radius client पे आप उसके राइट पैनल में एक विजार्ड, एक ऑप्शन मिलेगा आपको, राइट पेन में यू कैन से दैट, वहां पर आपको रेडियस क्लाइंट का ऑप्शन मिलेगा. जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट रेडियस क्लाइंट. देन उसके बाद आपको नाम देना है जो राउटर का है. राइट नाउ इन माय राउटर द नेम इज समथिंग लाइक दिस. यहां पर जैसे कि आप नाम देख रहे हैं कि इट इज मैनेजमेंट राउटर, तो जो नाम यहां पर आप होस्ट नेम एज अ होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपको वो देना है. उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर रेडियस क्लाइंट का आईपी एड्रेस पूछेगा, मतलब राउटर का आईपी एड्रेस. वहां पर आपको राउटर का आईपी एड्रेस देना है, नेक्स्ट करना है. और वहां पर आपको वेंडर्स बहुत सारे मिलेंगे, जस्ट लाइक इफ यू हैव अप्लायंसेस फॉर सिस्को, इफ यू आर अप्लायंसेस फॉर Centralized और IBM के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और अवाया के हैं, नॉटल के हैं, किसी के भी हैं, तो उसमें ऑप्शंस आपने चूज करने हैं. बाय डिफॉल्ट जो सिस्को काम करता है वो करता है डिफॉल्ट रेडियस प्रोटोकॉल से. सो वहां पर आपको सेलेक्ट करना है रेडियस स्टैंडर्ड. दैट टू बी ऑलमोस्ट डन. जस्ट नेक्स्ट फिनिश. And same way you can also configure the radius accounting if you want, and there are other policies also available. If you want, you can do it. But as I told you, it is not the part of our demonstration. What we are going to do right now, we are going to configure TACACS Plus specially for this, because radius server is pretty easy and it is not a good option for centralized management, especially when you talk about the network devices management. So better without waste our time, let's get started and try to learn step by step. So I request you write down the commands carefully and properly, because अगर एक भी कमांड में आपने प्रॉब्लम किया तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन या आपके नेटवर्क में इश्यू आ सकता है रिगार्डिंग सिक्योरिटी और ऑफ कोर्स द राउटर लॉकडाउन. मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि हाउ यू कैन मेक योर राउटर्स लॉकडाउन बाय मिस्टेक. But before that, I already configured IP address, and just like you can say here, my interface F1/0 for the router is connected with Cisco AAA server, and the IP address for Cisco AAA server is 10.0.0.2. and उसके साथ साथ मैंने डिफॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, which is the IP address of F1/0 interface of the router, that is 10.0.0.1. And for the same way, I also configured other interfaces as well with different IP addresses, but we don't need to care for right now. We need to only care for this demonstration about the connectivity in between your server and your router. So let's start with the configuration. First, you have to go to the global configuration mode. And in the global configuration mode, I always recommend to the beginners, especially for those users जो पहली बार ये demonstration कर रहे हैं, better I suggest you to create at least 2 username. I'll tell you why you have to do this, because कभी-कभी क्या होता है जब आप configure करते हैं आपका AAA, तो कभी-कभी हम अपने
कभी आपका TACACS प्लस के साथ मतलब कम्युनिकेट नहीं होता है या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इन रियल टाइम सिनेरियो, तो this is really good that if you create this users in your local database of the router, so in any case आपका TACACS plus communicate नहीं कर रहा है, so you can log in with another user which is I'm going to create in the router. So that's why it is a good option to do it. So यहाँ पर मैंने एक यूजर नेम एडमिन नाम से क्रिएट किया है विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस जो मैंने यहाँ पर दी हैं वो दी हैं 15, दैट इज फुल परमिशन, एंड द सीक्रेट पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर दिया है इसको वो दिया है सिस्को. सो दिस इज अवर फर्स्ट वन. आई रिक्वेस्ट यू टू क्रिएट अनदर वन बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि अगर आपने यहाँ पर किया, जैसे मैं यहाँ पर एक यूजर वन कर रहा हूँ, यूजर प्रिविलेजेस, प्रिविलेज नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर मैंने प्रिविलेज लेवल चेंज कर दिया है. उसके बाद यू कैन गिव द सीक्रेट. आई एम गोइंग टू गिव द सीक्रेट विद द सेम, दैट मीन्स माई पासवर्ड इज द सेम. तो मैंने यहाँ पर 2 यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं जो बाय डिफॉल्ट, अगर मेरा TACACS प्लस या रेडियस सर्वर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है या वट एवर यू वांट टू डू इट, तो अगर वो उससे कॉन्फ़िगर नहीं होता है या कम्युनिकेट नहीं होता है, सो ऑटोमेटिकली द राउटर्स विल चेक द लोकल डेटाबेस, एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड 2 यूजर फॉर यू. Always the best option is to enable the secret password on the privilege mode. That is, I'm also going to use the same password, enable secret Cisco. So once you press enter, this is the basic configuration that I always recommend. Now let's start configuring AAA on this router with advanced configuration. So type AAA new model as you are doing first time on this router. So जैसे आप टाइप करेंगे, you enable some of the features related to AAA. Then the next thing is you have to configure TACACS server. And TACACS server के बाद आपको यहाँ पर IP एड्रेस देना है जिसके ऊपर भी आपने TACACS server कॉन्फ़िगर किया है. Now guys, मे बी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई कॉन्फ़िगर तो किया ही नहीं है. Right. We have not done this yet. So better we do one thing before to complete this command. Better we should go to the Windows Server 2003 and configure TACACS server, or you can say at least we should install ACS on this particular Windows Server 2003. So as I already discussed the prerequisite to do that, the first thing, please download and install Java runtime, and second thing, the .NET 2.0 Service Pack 1 is required for that. Now just go to the my computer, and I have already insert the DVD, or you can say I connect the ISO with this particular virtual machine. तो मैं यहाँ पर ACS की already मैंने की हुई है, connect की हुई है, तो double click on that. Then after that it will show you the Cisco Secure ACS version 4.2, which is only used on or configured on Windows Server 2000 and 2003. So just click on install here. I want to tell you guys the installation is very easy, just like you always do for other applications. Almost just done next. But there is a little bit things here that you have to remember. That's why I'm going to share with you how to do it. So यहाँ पर आप click next कीजिए, उनके बाद the install upgrade, restore application. Yes, I want all kind of thing, all kind of operation in ACS. So click next here. Now what you want? End user clients can successfully connect to AAA client. Yes, of course, this is good for me. Second thing is the Windows server can ping the AAA client. Yes, to verify the connections. Third is any Cisco IOS AAA client are running Cisco IOS release 11.1. It's all about the iOS. If your router iOS is below 11.0 or 11.1, you are not able to communicate with this ACS server or AAA server. So guys, it is the time or right time to upgrade your router iOS to at least the 12 point or 12 point something, whatever is available for the router. And of course, you need Microsoft Internet Explorer version 6.0 Service Pack 1 or 7.0. And also you can use the Firefox for your demonstration. I mean, in this demonstration, I'm going to use Firefox. And I already downloaded the latest version from Mozilla website, which is 22.0 version for Mozilla. So यहाँ पे next कीजिए, just install in the default location. Everything is good to go. Check the ACS internal database only, because right now we are not using Windows database or we are not using SQL database. So right now we are depends on, or we like to go with the ACS internal database only. So do not need to change anything here. Just click next. And now it is just installing the ACS
on this Windows Server 2003, which will take couple of minutes. It will not take that much time. और इसके बाद आपको क्या करना है, automatically it will ask to open one screen in front of you where you have to configure the ACS or users, जो कि आने वाली अभी demonstration में मैं आपके सामने share करूंगा कि how you can do that. But I'm just waiting for to finish this, because finish होने के बाद आपके सामने क्या screen आएगी और आपको करना क्या है, that I want to share with you. Right now is trying to say that if you want to configure some of the advanced option, for your guys, for your information, it is used in CCNP-Security or CCIE-Security field. So by default for CCNA-Security, we don't need to care, but I have planned to share with you to talk about this all advanced option, which is generally configured in CCIE. I'm going to share with you how to do it, but for right now, no need to do anything here. Just click next. And right now, the script to execute, restart all, I don't have any email server, so I don't want any email notification for any changes or any new thing in ACS. So just click next to almost finish this, and of course you have to give the password, and your password should be strong or at least minimum 8 characters. Don't forget, because it will maintain the database of the Cisco ACS. So if anybody wants to see, he has to give the password there. So click next, and almost done. Yes, it is almost done. Now you want to start the Cisco Secure ACS service? Yes, I want. Yes, I want to set up a launch because I want to show you how it looks like. Actually, we can, and we have to configure Cisco Secure by web console. अगर आप Cisco Secure ACS को कॉन्फ़िगर या एक्सेस करना चाहते हैं Windows Server 2003 में, so उसके लिए उन्होंने एक वेब कंसोल दिया है जो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा. So just click next to finish this. I don't want to read the readme file. So once you click next, it will set up or start the Cisco Secure ACS service for you. And जैसे ही ये complete हो जाती है, automatically it will open the web console for you, where you can create the username, you can configure TACACS Plus protocol, and if you forget or if you don't know how to access it, just need to open the Mozilla Firefox or Internet Explorer version 6.0 Service Pack 1 or 7.0 or later, and उसके अंदर आपको http//IP address और :2002 port number use करना है. So just click finish here. तो यहाँ फिनिश करते ऑटोमेटिकली कंसोल ओपन होगा, एंड गाइस दिस इज योर Cisco Secure ACS version 4.2. So right now, this is for application security warning, because by default the publisher is not verified by this particular browser. So I want to accept and run this application properly, and click run here. That's great. And to run this application we need Java, don't forget that. So everything is good to go, and now you can see easily, you can read also this particular line that will help you to understand that Cisco Secure ACS version 4.2 offers support for multiple AAA clients and advanced TACACS Plus and Radius features. It also supports several methods of authorization, authentication and accounting, including several one-time password cards, जो कि मैं अभी नहीं बट आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा that how to do that. But for right now, everything is good to go. Let's go back to our router and start configuring the next step in the router to configure TACACS Plus. We will come back on this, and we will also configure some of the part, but later. But before that, better हम पहले उसके ऊपर configure कर लेते हैं. So I'm going to minimize this. Let's go back to router. Yes, we are here. Now, जैसे कि आपने यहाँ पर कमांड टाइप किया TACACS सर्वर होस्ट, यहाँ पर आपको IP एड्रेस देना है Cisco AAA सर्वर का. तो इन माय सिनेरियो जो IP एड्रेस है Cisco AAA सर्वर का वो है 10.0.0.2. And guys, don't forget to ping or at least check the communication whether you are able to ping or not. So better, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि वो हो रहा है कि नहीं. So better let me check. And we are, yes, we are able to communicate. That's good for us. Now go to the next step. After type TACACS server host, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको TACACS ACS, यहाँ पर आपको टाइप करना है की, जो कि की हमारी यूज होगी
हमारे जो भी क्लाइंट साइड के ऊपर, तो मैं यहाँ पर जो की दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ सिस्को 123. सो यू कैन यूज एनी की, इवन यू कैन यूज द कॉम्प्लेक्स की. सो इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं यहाँ पर जनरल इजी ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए. सो वंस यू टाइप दैट, we are almost done with the TACACS configuration. That means this is the command to communicate with the TACACS plus protocol, or you can say TACACS server or AAA server. But now we have to go to the next step to configure authentication, authorization, and accounting on this particular router. So for that, you just need to type AAA-THEN authentication. तो ऑथेंटिकेशन, एंड प्लीज़ गाइज अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ आजकल इन स्पेशली इन सिस्को राउटर्स. सो लॉग इन, तो यहाँ पर मैं पहले हमेशा कॉन्फ़िगर करता हूँ डिफ़ॉल्ट. मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्यों लेता हूँ? बिकॉज गाइज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि, मैं आपको एक बार कमांड लिखने दो, मैं बताता हूँ. हाँ, या इसका मतलब ये है कि आई एम ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर AAA, एंड उसके बाद मैं यहां पर AAA ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूं फॉर लॉग इन, मीन्स इफ एनीबडी लॉग इन हियर. उसके बाद इट इज एप्लीकेबल ऑन डिफॉल्ट कंडीशन. डिफॉल्ट कंडीशन मीन्स ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके कंसोल पोर्ट पे, आपके जो VTY पोर्ट पे जहां पर आपका SSH एंड टेलनेट सेशन लगता है, और उसके साथ साथ आपका जो ऑक्सिलरी पोर्ट है या AUX है, उसके ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा. तो जो भी मेथड मैं अभी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन लॉगिन करना चाहता है, सबसे पहले वो ग्रुप चेक करे. ग्रुप नंबर 1, पहले वो मेथड लिस्ट चेक करे टैकेस प्लस के साथ. अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है टैकेस प्लस के बाद और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द यूजर, सो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाए. और अगर नहीं है गाइस, तो मैंने यहां पर एक ऑप्शन दिया है कॉल्ड लोकल. दिस इज व्हाट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू टेल द बिगिनर्स. गाइस यहां पर लोकल देने से आपको फायदा ये होगा कि अगर टैकेस प्लस के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है बाय एनी रीजन, ऑटोमेटिकली वो आपके लोकल डेटाबेस के जो राउटर का लोकल डेटाबेस है उसके साथ वो कम्युनिकेट करने लग जाएगा, विच इज रियली गुड फॉर यू. फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज आई डोंट वांट यू विल लॉक डाउन योरसेल्फ, आपका कम्युनिकेट नहीं हो रहा एंड यू विल स्टक विद द कम्युनिकेशन इफ समबडी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द रिमोट एक्सेस. So that's why it is good for you. So type enter here. So the first step is configured on this. Now this is always kind of, आप कह सकते हैं redundancy option, or you can say additional option if you just configure. But for real configuration, better you should start with the authentication. और यहां पर आपको जो लॉगिन करना है, यू हैव टू यूज द कस्टम नेम. जैसे कि मैं यहां पर ओथ ले रहा हूं, AUTH, और यू कैन गिव एनी अदर नेम व्हाटएवर यू लाइक हियर. सो यहां पर ओथ करने के बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं नन. दैट मीन्स अगर कोई भी कॉन्फ़िगर करना चाहता है, सो आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट, जस्ट फॉलो ओथ, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस ओथ custom name in the configuration for authorization and authentication as well, of course. So जैसे ये होता है, तो यहां पर आप टाइप कीजिए line console 0, because I want to secure, or you can say properly configured on my console port. So type login authentication, एंड यहां पर आपको लिखना है ओथ, जो भी अभी आपने रिसेंटली क्रिएट किया है. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑथेंटिकेट करना चाहता है, सो प्लीज फॉलो ओथ हियर. नाउ उसके बाद जैसे कि ये हो जाता है, लेट्स गो बैक, एंड उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है ऑथराइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो दैट आफ्टर ऑथेंटिकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑथराइजेशन. तो यहां पर आपको ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर करना है, एंड इन ऑथराइजेशन यू हैव टू कॉन्फ़िगर फॉर ऑल द कमांड्स. एंड राइट नाउ आई एम अप्लाइंग दिस ऑथराइजेशन, मीन्स जो भी हमारी पॉलिसी है, मैं या जो मेथड लिस्ट है, मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रिविलेज लेवल नंबर 1 के लिए, जो कि मैंने अभी यूजर के लिए क्रिएट किया था जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. तो जैसे ही यहां पर कर देते हैं, यू कैन गिव द नेम. सो आई गिव द नेम हियर TAC1. यू कैन गिव एनी नेम यू लाइक. आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप ग्रुप हियर, मतलब जो भी आपके ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कि इट विल डेफिनेटली आस्क फर्स्ट फ्रॉम TACACS server, which is almost secure for me. So यहाँ पर उसके बाद मैंने local दे दिया है कि as you know the reason, if TACACS plus fail to respond, so it will automatically respond with the local database. तो जैसे ही होता है, तो first command finish, then go to the second one for the authorization, because this time I'm going to configure my authorization for privilege level number 15. मतलब अगर किसी के पास
प्रिविलेज लेवल नंबर 15 है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी होगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके अंदर भी सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पर ग्रुप आपको करना है टैकेस प्लस एंड उसके बाद लोकल ऑफ कोर्स, विच इज गुड ऑप्शन फॉर मी। एंड जैसे ही हो जाता है, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू वन वेरी काइंड ऑफ, यू कैन से, सीक्रेट कमांड फॉर मी, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर आपको यूज करना है कॉन्फ़िग एंड उसके बाद कमांड्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स के साथ एक्सेस करना चाहता है, तो यू शुड गिव द ऑथराइजेशन फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास लेवल नंबर 15 की प्रिविलेज है, ऑफ कोर्स। नाउ हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर ली है, हमने ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर कर ली है। अब मैं आपके सामने कॉन्फ़िगर करने वाला हूं अकाउंटिंग। So for that you just need to type AAA, accounting, जैसा कि मैंने कहा था मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर द कमांड 1 एंड प्रिविलेज नंबर 1। सो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ which is quite easy for you, TACACS and dash ACT for accounting, and it is for 1। एंड उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप, बिकॉज जैसे ही कोई यूजर स्टार्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी अकाउंटिंग वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दे, दैट इज अ मीनिंग ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप। और जैसे वो स्टॉप करता है तब तक उसकी इंफॉर्मेशन लेता रहे, एंड इट इज फॉर व्हाट, whatever is accounting, it is going on the TACACS plus server. So done, which is good to me. Then after that, accounting, the next command for the privilege number 15। सो यहाँ पर टाइप कीजिए सेम कमांड, नो डिफरेंस एट ऑल, बट ओनली यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ACT15, तो दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप चेंज करना है, या ग्रुप को हमेशा मैं लिखता ओ, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप करना है, सॉरी, स्टार्ट स्टॉप के बाद आपको ग्रुप करना है। ग्रुप ऑफ कोर्स इज माय TACACS प्लस। तो जैसे ये चीज क्रिएट हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाइंग ऑन द लाइन VTY, बिकॉज this is our custom configuration, so we want to apply it on the special our SSS sessions or the telnet sessions. So how to apply, तो उसके लिए आपको जाना है line VTY 0/4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है authorization। so authorization, because authentication हमने already अप्लाई कर ली है, I guess you remember, but let me show you कहाँ पर मैंने अप्लाई की थी। तो गाइस जैसा कि आपने यहां पर देखा था कि मैंने यहां पर ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर ली थी फॉर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मींस मैंने बताया था तीनों ही आपके जो एक्सेस है आपके राउटर के, उन तीनों के लिए, आपके कंसोल पोर्ट के लिए, आपके लाइन VTY के लिए, और आपके जो ऑक्सिलरी पोर्ट है उसके लिए। लेकिन हमने ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर नहीं की थी, इसलिए मैंने यहां पर मैं लाइन VTY में ही सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं ऑथराइजेशन की, जो अभी हमने क्रिएट की है। सो जस्ट गो हियर। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है TACACS1 मीन्स TAC1, जो अभी हमने क्रिएट की थी। उसके बाद आपको सेकंड यहाँ पर चेंजेस करने हैं फॉर 15, और यहाँ पर TAC15 जैसा कि रिसेंटली मैंने आपके लिए बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर। और उसके साथ साथ आप कर सकते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर आपको यहाँ पर कमांड सेम उन बहुत चीज़ों के लिए, प्रिविलेज लेवल नंबर 1, और इसमें हमने नाम दिया था ACT1, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर नाम दिया था 15, एंड यहाँ पर मैंने चेंज किया था 15 वर्ड। डन। सो जैसे ये हो जाती है गाइस, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश विद दिस। नाउ वी हैव टू टेस्ट कि क्या हमारी सारी चीज ठीक हो रही है, चल रही है या नहीं। सो हाउ यू कैन चेक दिस थिंग्स? द फर्स्ट थिंग I want to tell you, if you want to check properly, better you should type debug AAA authentication, because मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि if I go to, I disable, I always forget S to write down here, so मैं disable करने के बाद I'll definitely go out, और even मैं exit ही कर जाता हूं, बिल्कुल finish। So guys, as you can see, I'm out of the router, so some administrator come first time, when he press enter here to get access, automatically it will show you management router, और यहां पर देखेंगे आप कि ये ऑटोमेटिकली यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन उसने जनरेट की है आपके राउटर्स ने, एंड ये क्या कह रहा है कि राइट नाउ इट इज एप्लीकेबल विद AAA बिकॉज योर कंसोल पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड विद दिस, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड फॉर द लॉग इन। एंड जैसा कि आपको याद होगा, मैंने वहां पर डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन लगाई थी, लेकिन यहां पर मैंने एक और कस्टम ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज किया था कॉल्ड ऑथ, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पर अप्लाई हुआ है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, TACACS प्लस पे मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो यहां पर मैं जब कॉन्फ़िग टी करूंगा, आई हैव ऑल द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, राइट? नाउ दिस इज बाय डिफॉल्ट, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स चेक with the
VTY सेशंस, क्योंकि अभी अभी मैंने ऑथराइजेशन भी कंप्लीट की है वहां पर, तो कैसे वो काम करेगा. So better we should check with the local database first. Then I will also going to share with you the database which I have created, which I will be created on the TACACS. मैंने create किया था लेकिन मैंने delete कर दिया. I'm going to create a new one for you. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा चेक करने के लिए, I just type the telnet on my local router and IP address of local router here which is 10.0.0.1. तो जैसे मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो उसने मेथड लिस्ट फॉलो की है वो की है डिफॉल्ट. तो जैसे मैंने बताया था, बिकॉज क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि टैकेस प्लस पे उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, स्टिल मेरा टैकेस प्लस रेडी नहीं है, तो इसीलिए उसने ऑटोमेटिकली जंप किया मेरे लोकल डेटाबेस पे. एंड गाइस फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो जंप होता है, मतलब जो मेथड लिस्ट मैंने क्रिएट की थी फ्रॉम टैकेस प्लस, अगर नहीं कम्युनिकेट कर रहा है तो लोकल पे चले जाओ. तो इन दोनों में जो टाइम ड्यूरेशन होता है बाय डिफॉल्ट वो रहता है 5 सेकेंड्स. एंड आई वांट टेल यू फॉर द टैकेस प्लस कम्युनिकेशन, यहाँ पर टोटल आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी का पोर्ट नंबर 49 यूज होता है. बट राइट नाउ आई एम नॉट, माई सेशन इज एक्सपायर्ड, सो लेट मी ट्राई कनेक्ट अगेन. And yes, we are connected. Okay, let me try or type the local username which is called admin. Press enter and automatically यहाँ पर username type करते ही वो मुझे कुछ information show करेगा. Please show something. No, that's great. So now type the password. तो password type करते ही it gives me the access. You can see that. And it will also generate some of the information regarding the same. And जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर automatically उसने status generate किया है get pass. That means it allows me to get inside, which is completely based on AAA authentication. And after that it also means what kind of method I'm using. जो मैंने अभी आपको command type किया, मैंने यहाँ पर enable type किया, automatically in the authorization उसने ये चीज़ भी capture की कि what kind of authentication, I means what kind of privilege this particular user have, and उसके according उसने मुझे access दिया. Now this is all about, let me go back and exit with the telnet session. Now this is all about the local database. Now guys, कैसे आप TACACS Plus के ऊपर यूजर क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे कैसे टेस्ट करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं. तो उसको करने के लिए better you do one thing. Let's go back to our ACS server and try to configure it step by step. So right now I'm on my Cisco Secure ACS version 4.2, and how you can do that and how to configure step by step. वैसे तो there are multiple options related to user setup, group setup, shared profile components, network configuration, system configuration, interface. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. It's really tons of features are available, but right now we are not going to discuss any one of them except a few things. The very first thing, better you should go to first to the network configuration. नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहां पर जो कॉन्फ़िगर करना है वो करना है जो आपका सर्वर है और जो आपका क्लाइंट है. सो राइट नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑलरेडी वो मेंशन कर रहा है कि सर्वर इज कॉन्फ़िगर, दिस इज द कंप्यूटर नेम फॉर माय मशीन. मतलब जो ये मेरा विंडोज सर्वर 2003 है, उसकी मशीन का जो मैंने नाम दिया है वो दिया है AAA सर्वर. तो इसीलिए आपको यहां पर वो AAA सर्वर दिखा रहा है. एंड दिस इज माय IP एड्रेस, and of course it is Cisco Secure ACS. Now what we have to do, we have to configure AAA client which is not now configured by default. You can see now. So click on add entry, और यहां पर आपको जो नाम देना है, make sure you should give the proper name. So यहां पर जो मेरा नाम है वो है management router, और अगर आपको याद नहीं है so let me show you one more time. जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि जो मैंने होस्ट नेम दिया है वो दिया है मैनेजमेंट राउटर. सो यू शुड रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज गलत नाम दिया तो नहीं चलेगा. उसके बाद IP एड्रेस ऑफ द इंटरफेस थ्रू विच दिस Cisco AAA is connected, or you can communicate with that. एंड उसके साथ साथ जो आपने शेयर्ड सीक्रेट वहां पर दिया था वो आप दे सकते हैं, बिकॉज टैकेस प्लस में मैंने जो शेयर्ड सीक्रेट आपके सामने शेयर किया था वो था Cisco 123. तो यूज द सेम वन. If you have radius server, you can configure the same, but I do not have configured anything here. And anything else I can do here? Right now, I'm going to use the authenticate using TACACS Plus or Cisco IOS for that, which is good to me. Everything is good to go.
or this is also a good option that at the same time the single connection is connected by the TACACS client. So once it is done, just click on submit and apply. So जैसे ही अप्लाई होता है तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कॉन्फ़िगर हुआ है और यू डन विद दिस, and this is TACACS plus Cisco client of course, and this is the IP address of my that router. Now go back on the user group. You have to create some users so that you can later use in our configuration. Okay, I'm not able to communicate. That's great, guys. Maybe it will take a little bit time, so let me pause the video and I'll come back once it is connected properly. Alright guys, तो इसने अराउंड 1 मिनट ले लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया. तो जैसे ही आप यूज़र सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कि कोई यूज़र है या नहीं. सो हाउ यू कैन चेक, जस्ट क्लिक ऑन फाइंड एंड बाय डिफॉल्ट यू कैन सी नो मैचिंग यूजर्स और एनीथिंग. मीन्स मेरे सिस्को सिक्योर ACS पे कोई यूज़र क्रिएट नहीं है. सो हाउ यू कैन डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन एड और एग्जिट, और सॉरी एडिट एग्जिट. वाह हर्ष, राइट नाउ कह रहा है कि बेटर यू शुड टाइप द यूजर नेम जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं. सो मैं यहां पर क्रिएट करना चाहता हूं विद द नेम ऑफ टेस्ट एडमिन फॉर आवर टेस्टिंग पर्पज. सो क्लिक ऑन एड एडिट. सो यहां पर ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन दिखाएगा. उसके बाद रियल नेम यू कैन एड इट. आई एम गोइंग टू गिव द सेम नेम. इट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर. वाओ. उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे तो इट विल यूज द सेम ACS इंटरनल डेटाबेस. व्हाट इज द पासवर्ड यू वांट टू गिव फॉर दिस. सो मैं यहां पर पासवर्ड सिंपल ही दूंगा, विच इज राइट नाउ आई एम गिविंग इज सिस्को. तो जैसे यहां पर दिया उसके बाद आप बहुत सारी ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अगर आपने स्पेशल ग्रुप्स बना रखे हैं जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, लाइक यू कैन क्रिएट इट विद इन द ग्रुप सेटअप हियर. लेकिन जैसे अगर आपने ग्रुप 1 बना रखा है फॉर VoIP एडमिनिस्ट्रेटर्स, और अगर आपने ग्रुप 2 बना रखा है राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर, सो यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर यूजर इनटू द ग्रुप. अकॉर्डिंग टू दैट ऑथराइजेशन विल बी अप्लाइड और इट इज एप्लीकेबल ऑन दैट. नाउ जैसे कि आपने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन रीड वन बाय वन. इफ यू वांट टू यूज दैट, डू इट. बट फॉर राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स to do that. And once it is done guys, everything is good to go for me. So just click submit. So remember password, that's great. Okay, leave it. So now try to find. तो जैसे यहाँ पर आप फाइंड करेंगे इट विल टेक लिटिल बिट टाइम अगेन, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ राइट साइड में आपको शो करेगा एक यूजर जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया है. सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फाइंड पे क्लिक किया एंड ऑटोमेटिकली उसने मुझे शो किया कि जो रिसेंटली आपने यूजर क्रिएट किया है वो ये है. नाउ गाइज, हाउ यू कैन टेस्ट दैट it is working or not. So better you should go to the router back, I mean router पे जाइए, and वहां पर आपको privilege mode में एक command type करनी है just for checking. First thing I want to check with the debug TACACS, ताकि मैं चेक कर पाऊँ हर एक information related to debug means TACACS. तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, you can test AAA group. उसके बाद यहाँ पर आप TACACS प्लस टाइप करेंगे एंड देन द यूजर नेम जो आपने उसके अंदर बनाया है आपके TACACS प्लस में या सिस्को सिक्योर ACS में. उसके बाद उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया है सिस्को, एंड ऑफ कोर्स लेगेसी, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है दैट इज सिस्को प्रोप्राइटरी. तो यहाँ पर ठीक है, जस्ट क्लिक एंटर एंड वाओ दैट्स ग्रेट. इन द फर्स्ट टाइम इट अलाउ मी, बिकॉज गाइस जैसे मैं पहले ट्राई कर रहा था तो मुझे वो फेल दिखा रहा था, बट दैट्स रियली ग्रेट. The router loves you all. So exactly यहाँ पर देख रहे हैं कि user was successfully authenticated. That means जो भी मैंने user बनाया है with the name of test admin and with the password Cisco on my legacy device, तो उसने automatically उसकी information check की, is it available, it is working or not, and yes, you can see fine now it is successfully connected. And also you want to check, you can check by telnet also. So जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे it will ask you to username. Better you should type get user. Type the username, so I'm going to type test admin here. So जैसे टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मुझे दिखाएगा कि get the password, please type the password. तो मैंने जैसे यहाँ पर सिस्को टाइप किया तो टाइप करने के बाद it will allow me to respond and automatically whatever the permission I have it will allow me to go inside. Oh, access denied. Wow. because मेरे पास परमिशन नहीं है. पासवर्ड, oh stop please यार, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो गाइज यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि वो हर एक चीज को सिंगल पैकेट जो जाता है उसको एग्जैक्टली वो एनक्रिप्ट करता है और आपके सामने इवन इंफॉर्मेशन भी रखता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज रियली गुड
for you, and you can see we are inside now. We are able to configure. Even मैंने अंदर गया तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे बताया कि किस पर्टिकुलर यूजर ने लॉगिन किया, उसने कौन से राउटर पे लॉगिन किया, उसका पोर्ट नंबर क्या है, उसने कौन से आईपी एड्रेस से लॉगिन किया. हाँ, so many things. And even what kind of privilege level I have to access this. So as you can see right now, we are successfully logged in with this, and of course you can check it also. Show sessions. अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेशंस आपको दिखाएगा. सेशन बिकॉज टैकस के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो इवन सेशन भी चेक करना चाह रहा है, उसकी मुझे परमिशन नहीं है. सो इफ यू इवन यू वांट, यू कैन चेक इट ऑन टैकस प्लस. So guys, this is the demonstration for the radius and the TACACS plus. Of course, I do not take the radius in this because it is not a good option to configure in a router's network or any of the network device network. Yes, if you have the VPN or direct access configuration or the server's configuration, then you can recommend radius server for that. But just now we finished with the TACACS plus protocol. I hope you understand that how it works. If you have any query or anything in your mind, if you want to ask any question, please you can send me the email on harshadmin@gmail.com, or even you can write down the comment below in the YouTube post, means where you can post the things. So that to be all for today. Thank you so much guys for watching, and stay connected, stay tuned, because more to come in CCNA security. And definitely I will try to share with you most of the real-time scenario, because this is real-time scenario. That's what we did here. So thank you so much one more time. Once again, have a nice day.